this was my plan B actually. This job in academics, this was my plan B, but plan B became my plan A क्योंकि वो सारा focus इस पे था कि अगर UPSC नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा. For me, I write because it helps me remember things. So this time I increased the number of questions that I attempted. I attempted about 95 questions. So, sir, I'm not someone who has been cool in exams, nothing like that. I have been someone who's very anxious, can't sleep, will have breathing issues and whatnot. But I think the key is to tell yourself to be fearless. एक ये भी है सर कि मेरे पास यहाँ एक permanent job थी, so अब मेरे पास वो do or die वाला case नहीं था. Hello everyone, welcome. And today we have with us Akanksha Singh, soon to be Dr. Akanksha Singh, because she is just about to complete her PhD in the next couple of months. So Akanksha has secured AIR 44 in the UPSC Civil Services Exam 2023, and she has done her BA from Miranda House in Geography. Then she's also done her MA, MPhil, and as she's currently pursuing her PhD, all of these from JNU. She's also working in Ranchi University at the Yes. moment. And there also she's teaching geography, तो geography से काफी उनका लंबा नाता है. So welcome Akanksha. Thank you, sir. Happy to be here. So मतलब before we go forward, this is generally something that I do कि Akanksha was associated with us for our test series program. मतलब interview guidance came later, and therein I think one of the sort of outstanding things about her was that she's the one of the very few students who has written all tests almost. And that was something that amazed us even while the prep phase was going on. So like, what was your driving factor? Balab, I've seen people enroll for test series. I've not seen them give all tests. What was the driving factor for you? Okay, so sir, actually my elder brother, he wrote the mains for the year 2022. Okay. And that was his first mains. And during his mains, he told me that, it's very important to write answers. So if you are aiming for 2023, you should start writing from now itself. So a year in advance, he told me that I should enroll in some coaching institution for mains test series. And that is when I joined UPSC Prep. So I started writing into 2022 September, but I was writing like one paper a week उस तरह से. तो उसमें क्या था सर कि जब by the time I cleared prelims, I had written around say 10-12 tests. So I was in a better, I was in a better stage than most people who start after prelims result. तो क्योंकि मैंने यूपीएससी प्रेप में शुरू से लिखना मतलब स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए बाद में मैंने और भी लिया, फोरम से भी मैं ले रही थी मेंस टेस्ट सीरीज. बट मेरा वो था कि इसमें 12 टेस्ट हो गए हैं, एंड आई थिंक देयर वर अराउंड 38 टेस्ट सब मिला करके. तो मेरा द आइडिया वाज कि जितना ज्यादा लिखिएगा, एंड आई थिंक कृष्णा सर वाज चेकिंग माय कॉपीज एंड ही वाज गिविंग मी वेरी लाइक मोटिवेटिंग फीडबैक, सो दैट वाज आल्सो हेल्पिंग मी. इसलिए भी मैं उसको आई वाज कंटिन्यूइंग, उसको मैं लिख रही थी टिल द एंड. Like writing, this is something जैसे कि I have a book also on this. I've been reading lately, Writing to Learn, right? So the idea is that writing clarifies your thinking. What is your opinion on this कि as a means of preparation, आंसर राइटिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे मेंस में अच्छे नंबर लाने हैं, बट आंसर राइटिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट इज हेल्पिंग यू क्लैरिफाई योर थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Yes, sir, clarity to milti hai, that's one, and I think it also helps us retain better. So for me, I write because it helps me remember things. So that ways, and also sir UPSC में क्योंकि we need a structure in the answer, we need an introduction, conclusion, तो उस frame of mind में आप जा सकते हैं. And writing more number of tests में आपका क्या होता है कि you are encountering some questions which you've never heard of, एकदम दूसरे नए टॉपिक्स पे आप लिख रहे हैं, so that challenges you also. So in that sense, I think answer writing का utility है, not just to improve your score, but also to retain what you have already studied. So you've been talking about कि भाई 2022 में आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली थी because your elder brother was somebody who gave mains that year. तो मतलब has he मतलब been giving the exam before, या पहला वो भी उनका पहला ही अटेम्प्ट था, या क्या कर रहे थे? उनका सर मेंस तो वो पहला था, प्रीलिम्स वो दे रहे थे पहले, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट क्लियर बिकॉज हिज परफॉर्मेंस इन ऑप्शनल वाज नॉट अप टू द मार्क. But yes, he used his, I mean, how should I say? Experience.
yeah, experience to improve my preparation. He warned me that ऐसा मत करना कि एकदम last में आंसर writing शुरू करो, पहले से ही be Hmm. in the mode. Yeah. So, मतलब when did you start your UPSC preparation per se? So, sir, for me, I have not focused on preparation. जैसे पूरा वो घर में बैठ करके बाकी सब चीज छोड़कर वैसे Hmm. मैंने नहीं किया है. तो after doing my post graduation MA in geography, after that I enrolled for MPhil PhD program in JNU itself. Hmm. उसके बाद मैंने ये प्रिपरेशन के बारे में सोचा. तो I was reading some standard books और मैं प्रीलिम्स का एग्जाम दे रही थी. लेकिन मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो. Okay. Or so I started around 2019, but every year I was sitting for prelims, but मेरा clear नहीं हो रहा था. After I got a job here in Ranchi, then I Hmm. got some time to focus on preparation apart from my job. So that is when I could clear prelims. So this was my fifth attempt overall, Hmm. but I would say that it was my second serious attempt. इसके पहले एक अटेम्प्ट में आई वाज क्लोजेस्ट टू द कट ऑफ बट उसमें मैं आई लॉस्ट बाय 1.75 मार्क्स सो आई कुडंट क्लियर. GS1 में 2 में? GS1 में सर, GS2 Okay. तो क्लियर हो जाता था, GS1 में. और इस बार तो कट ऑफ से ज्यादा ही मेरे मतलब आई हैड अ मार्जिन ऑफ अबाउट 24 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ. That's quite good. यस सर. So, मतलब if we had to say कि भाई आपका जो first serious attempt था, which I'm assuming was 2022, was नो it? सर, नो सर, 2022 वाज माय सेकंड सीरियस अटेम्प्ट. उसके Okay. पहले एक बार मैंने 2020 में दिया है. Hmm. दैट ईयर द कट ऑफ वाज अराउंड 91.75 मार्क्स Hmm. एंड आई हैड स्कोर्ड 90 पॉइंट समथिंग, 90.25 मार्क्स. या तो बिटवीन दैट अटेम्प्ट एंड CSE 2023 का जो अटेम्प्ट था आपका, मतलब आपकी तैयारी में क्या फर्क आया? मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर डिफरेंटली फॉर प्रीलिम्स गिवन द फैक्ट दैट आल्सो इस साल प्रीलिम्स मतलब ज़्यादा टफ था? yes, sir. So I think the main difference in my strategy was in the previous attempt I used to focus more on accuracy. Hmm. So I used to think that I'll just attempt 75, 77 questions, but Hmm. my accuracy will be say 80%. But that never used to happen. So Hmm. this time I increased the number of questions that I attempted. I attempted about 95 questions. So 95 questions may I got a total score of Hmm. 99. So I think That's increasing the number of questions helped. but again like and this is just for the sort of debate on this. मैं नहीं बोल रहा कि भाई 75 करो 95 करो, but what made you choose कि भाई 95 करने चाहिए इस पेपर में? Did you do that just in the paper itself, or was it something that you'd been trying consciously to do before in the test series also? Yes. So, sir, I was taking in UPSC prep also. I had taken this integrated prelims comes mains test Hmm. series. यहाँ prelims का भी बहुत सारा tests मैं दे रही थी. तो in the mock test तो I used to try कि जितना ज़्यादा question करें 95, 98, 100 जिसमें एकदम clue नहीं है सिर्फ वही question छोड़ते थे. Hmm. जिसमें मतलब हल्का सा भी लग रहा है कि एक भी option eliminate कर रहे हैं तो I used to do it. I used to go And what attempt. was your average score in these tests जो आप मतलब 95 99 question attempt कर रहे हो? Hmm. So I think I was getting around say 110 plus मिल जा रहे That's थे. a pretty good score. यस सर. बट इस अटेम्प्ट में ही सर, इसके पहले प्रीलिम्स का स्कोर बहुत खराब हुआ करता था. हाँ, तो बदलाव क्या आया? मतलब आपने अटेम्प्ट का नंबर तो बढ़ाया, बट अटेम्प्ट का नंबर बढ़ाने से मतलब वही ट्रांसलेशन नहीं आता ना सीधा, क्योंकि अगर आपका कुछ बेस लेवल पे चेंज नहीं हुआ है तो व्हाट वाज इट दैट चेंज फॉर यू? सो आई थिंक नॉलेज बेस भी बढ़ा है और हम्म. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की वजह से थोड़ा एलिमिनेशन भी कर पा रहे थे. हम्म. और एग्जाम में जैसे हमने देखा कि वो 1 पेयर 2 पेयर के क्वेश्चन आए तो उसको देख के मैंने बहुत ज्यादा ऐसा लोड नहीं था दिमाग में कि ओ पैटर्न हैज चेंज और समथिंग लाइक दैट. In fact, I thought कि it has made our lives easier because you don't have to actually find out which pair is correct. You just Yeah. have to calculate that what is the probability कि 2 पेयर correct होंगे इसी तरह हम्म. से. Yes, sir. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि 2022 के प्रीलिम्स में थोड़े कुछ क्वेश्चंस आए थे वैसे वो 1 पेयर 2 पेयर वाले, but I think there were about like 10 to 15 questions of that sort. Then in 2023 what happened is 50% of the questions almost were of that sort. Yes, sir. So were you mentally prepared, or like was it just मतलब have you always been somebody who's cool in exams, या कैसे है मतलब what is it? Because so many people come to us and they say कि यार ये घबराहट हो जाती है ये देख के कि भाई क्या करें नहीं करें कैसे करें, तो मतलब what would you advise somebody who's giving prelims now to deal with this? So, sir, I'm not someone who has been cool in exams, nothing like that. I have been someone who's very anxious, can't sleep, will have breathing issues and whatnot. Hmm. But
I think the key is to tell yourself to be fearless. I mean, आप जब आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं, और एक ये भी है सर कि मेरे पास यहाँ एक परमानेंट जॉब थी, सो हम्म अब मेरे पास वो डू और डाई वाला केस नहीं था. आई ऑलरेडी हैड अ प्लेस टू बी, और मुझे लगा कि यहाँ से यू कैन ओनली गो हायर, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनी लोअर. तो वो एक दिमाग में एक कॉन्फिडेंस भी था. और मुझे लगता है कि जहां तक एडवाइस की बात है, आई थिंक स्टूडेंट शुड थिंक कि हमारे जो कंट्रोल में जो फैक्टर्स हैं वो है हम्म अपना प्रिपरेशन, अपना हार्डवर्क. या पेपर जैसा भी आएगा वी विल गिव आवर बेस्ट. हम शांत दिमाग से हम लोग देंगे एग्जाम को, आउटकम को डिटैच करेंगे. आउटकम जो होगा वो हमें यूपीएससी बता देगा, डोंट वरी अबाउट इट. बट हमारे हाथ में हमारा प्रिपरेशन है, लेट्स फोकस जस्ट ऑन दैट. So, in your journey, now you've had a long academic journey also, in the sense of कि भाई आपने पहले मतलब BA, then MA, then MPhil, then you're currently pursuing a PhD. At what point did you achieve this enlightenment that you've just shared with us कि जो हमारे हाथ में है, उसी पे effort डालना चाहिए, because this is not something that comes naturally to us. So I think initially I'd like to share something. I used to be someone who used to think कि बस एग्जाम देने की देर है और एग्जाम निकल जाएगा, इस मोड में रहती थी, चाहे कोई भी एग्जाम हो. Okay. So so after my bachelor's in geography from Miranda House, I went for MA in CSRD JNU. तो उसके लिए भी एंट्रेंस लिखा था, हो गया पहली बार में. Hmm. उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया, हो गया पहली बार में. उसके बाद एमफिल के लिए गए, हो गया पहली बार में. तो लगा कि बस एग्जाम देने यूपीएससी में बैठना है और हो जाएगा. हाँ. बट वो पूरा एक्सपीरियंस नहीं, humbles you, it हाँ. it really grounds you कि नहीं, ऐसा नहीं है. तो पहले सारा वो नीचे रखिए, अपना जितना ईगो है कि एग्जाम निकल जाएगा, एंड That's देन फिर correct. समझ में आता है फेलियर से सीख के. दैट्स हाउ आई हैव लर्नड. I think I would completely 100% agree with you because मतलब यूपीएससी अपार्ट फ्रॉम दोज रेयर पीपल जो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में और भाई मतलब अंडर 100 रैंक से निकाल लेते हैं, इट्स एन एग्जाम दैट हम्बल्स एवरीबडी. मतलब लेफ्ट राइट सेंटर, नो रिगार्ड फॉर एनीबडी, कौन क्या जीनियस नहीं है क्या है, सबको बराबर ले आता है, सबको कभी प्रीलिम्स में फटका, कभी मेंस में फटका. ट्रू सर. So, Agacha, did you give mains before this attempt, or was this your first mains and first selection? So I think in UPSC, this is the first time that I qualified prelims. In the previous 4 attempts, I had not qualified prelims even. मैंने Hmm. स्टेट में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंस दिया है, तो Hmm. उनका मेंस का फॉर्मेट यूपीएससी से बहुत सिमिलर होता है. Hmm. तो थोड़ा सा मुझे वो एक्सपीरियंस था कि टाइम पे पेपर कंप्लीट करना, और वो वाला आइडिया था. Hmm. 2022 में मैंने स्टेट का दिया था, बट यूपीएससी में दिस वाज माय फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू. So, मतलब हाउ डिड यू गो अबाउट कि अब देखो जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि भाई ये 4 फिल्म्स मैंने दे दिए हैं and like I've not been able to clear it 4 times. Now, you being a good student, somebody who had, in your first attempt cleared, मतलब you come from first and foremost Miranda House, which is a good college. You need like a very high percentage to get in over there. 99, 900 चल रहा है आजकल तो. आजकल वो भी थोड़ा अलग ही एक जोन चल रहा है. देन ऑब्वियसली एमए में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट, एमफिल में फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो लाइक जब वो 4 बार फिल्म्स का फेलियर हो गया, तो वही फिफ्थ अटेम्प्ट में वो माइंडसेट क्या था? मतलब ऑब्वियसली योर जॉब वाज समथिंग दैट हेल्प, बट व्हाट एल्स? हाउ डिड योर नॉलेज बेस एक्सपैंड? व्हाट वर द थिंग्स दैट यू रेड? डिड यू चेंज द बुक्स? डिड यू नॉट चेंज द बुक्स? व्हाट वर द थिंग्स दैट हैपेंड? So it might sound a little odd, but this is the first time that I had given time to analyzing previous year questions. पहले हम्म. मुझे लगता था कि previous year question पढ़ना क्यों है, वो दोबारा तो आएंगे नहीं, इससे हम्म. बढ़िया mock exam देते रहते हैं, उससे में भी कुछ overlap हो जाए. लेकिन हम्म. ऐसा होता नहीं है. तो strategy में change ये था कि previous year questions बहुत अच्छे से इस बार करके गए थे. Because that helps you gain an insight into the examiner's mind. I mean, how the sentences are being structured, how you're हम्म. going to eliminate, and so on. And reading each option, that also helps. So that was one fundamental change in strategy. And not thinking so much about accuracy, but increasing the number of attempts also हम्म. worked. सो लाइक पीवाईक्यूज जैसे आपने बोला कि भाई मतलब यू स्टडीड देम अ लॉट मोर, तो लाइक कितने साल के पीवाईक्यूज आपने स्टडी करे, एंड लाइक व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू विद लेट्स से मतलब पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज में आप कर क्या रहे थे, देख क्या रहे थे? व्हाट इफ वी टेक अप एनी वन क्वेश्चन, व्हाट डज समबडी हु इज गिविंग प्रीलिम्स 2024, हाउ डू दे गो अबाउट एनालाइजिंग पीवाईक्यूज?
सो सर इंटरनेट पे तो पीवाईक्यूज आई थिंक 1989 ऑनवर्ड्स अवेलेबल हो जाता है, या लेकिन मैंने पिछले 20 साल का किया था। ओके और उसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि क्वेश्चन तो देख रहे हैं, द आइडिया इज नॉट टू जस्ट फाइंड द राइट आंसर, द आइडिया इज टू लुक एट ईच ऑप्शन ऑल्सो एंड रीड अबाउट दोज ऑप्शंस. Suppose there is some pillar inscription and there are 4 options. So you can know, okay, this is referring to this option B pillar inscription, but know something about A, B, C, D, all of them, because those options can be used in the question next time. So that is the utility, and also to look at the sentences, the way they are structured. For instance, वो extreme statements जो हैं, जो exclusive statements हैं, उसके ऊपर ध्यान. So because I think I was talking to somebody and they were telling me कि भाई यूपीएससी भी क्वेश्चन कैसे बनाता है. यूपीएससी क्या करता है कि like it basically outsources a lot of it in the sense of कि they will collate maybe 5,000 10,000 questions of which 100 questions will be selected for prelims. अब वो 5,000 क्वेश्चन बनवाने कैसे हैं. आप उनको पिछले साल के क्वेश्चंस भेजोगे एंड हाँ. दैट इज हाउ दे मेक क्वेश्चंस. तो नेचुरली समथिंग दैट यू सेड कि भाई अब किसी को आलस करना है क्वेश्चन बनाने में, मैं क्यों नया सोचूं, भाई पिछले साल के ऑप्शन में निकाल के वो दे दो. Option. Yes, sir. So that is where somewhere I think PYQs are always very useful. And somebody also said that you have to treat PYQs as a separate subject in and of itself. True, sir. True. So like, how did you do that PYQ analysis for mains? मतलब, was it any different, or what was your approach and methodology for mains? Sir, in mains, I did not focus too much on previous year questions. Reason being कि mains में current वाला GS2 और GS3 में current becomes very important. So एक idea ले लिया था किस तरह के questions आ रहे थे, and मुझे ये समझना था कि there's this one junior of mine who cracked UPSC in 2022 with rank 52. Her Okay. name is Pratiksha. So she told me that whichever question is asked, एक फंडामेंटल चीज होती है क्वेश्चन को एड्रेस करना. कई बार हम वो लिख देते हैं जो हमें आता है, ना कि वो जो क्वेश्चन में पूछा गया है. Absolutely. तो उसको सर एड्रेस करने के लिए मैंने थोड़ा प्रीवियस ईयर टॉपर का भी कॉपी वगैरह देखा, लोग कैसे लिख रहे किन हैं. किन की टॉपीज किन किन की कॉपीज देखी आपने? सर जैसे एथिक्स में मैंने विशाखा यादव मैम की कॉपी देखी थी. हम्म एसए में भी जो लोग टॉप स्कोरर्स थे फोरम पे, उनकी कॉपीज थी, वहां से देखा था लोग ऐसे कैसे लिख रहे हैं. हम्म और उसके बाद ये था कि इन लोगों का कॉपी देखने के बाद ये रियलाइज हो गया कि यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन इन पार्ट्स. अगर क्वेश्चन में तीन, इट्स अ 3 part क्वेश्चन, सो योर आंसर आल्सो हैज टू बी इन 3 parts, so that it should appear that you have addressed each part of the question. That. So इसमें सर मैंने ज्यादातर करंट का हेल्प लिया, टेस्ट सीरीज का हेल्प लिया. इसमें प्रीवियस ईयर को मैंने लिमिटेड ही यूज किया है इन मेंस. ओके. सो एक जैसे बहुत ही मेंस के दौरान ये सवाल बार बार आने लगता है कि हाउ डीपली शुड वन एड्रेस अ क्वेश्चन, और इज इट मोर इम्पोर्टेंट दैट इट अपीयर्स दैट आई एड्रेस्ड इट. मतलब डू यू गेट द जिस्ट ऑफ इट कि बहुत बार क्या होता है, लोग वो हेडिंग बना देते हैं जो क्वेश्चन का कीवर्ड से है. they've not addressed the question per se, but like वो heading बना दी and then they're coming and negotiating with me कि सर इसमें नंबर क्यों नहीं मिले मेरे को. Yes, sir. तो like how deeply should one go about addressing a question? Let's say एक एग्जांपल ले लेते हैं. there was a question that came in I think your mains कि what can France learn from India's idea of secularism. was it your mains or previous one? तुम्हारे में नहीं था शायद No, ये. sir, this was previous one. This was 1 year previous. 2022 mains. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, like, if this is the question, what can France learn from India's idea of secularism? How would you break this question, and like, what would be the parts? Okay, so sir, what can France learn from India's idea of secularism? तो पहला तो सर इंट्रोडक्शन में सेक्युलरिज्म के बारे में लिखेंगे. उसके बाद जैसे कि अब हम लोग फ्रांस और इंडिया का एक फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियाज आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म. सो आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज, पहला एक सेक्शन में हम फ्रांस के बारे में लिख सकते हैं, उनका सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है. इसको हम लाइक वी शुड नॉट डेलिबरेटली ट्राई कि इसको हम कॉलम में बना के अलग अलग लिखेंगे, बिकॉज हो सकता है पॉइंट्स कम हो हमारे पास. तो पैराग्राफ में ही हम पहले फ्रांस को एड्रेस कर लें, फिर हम इंडिया को एड्रेस कर लें, और उसके बाद हम अपने वर्ड्स में एक उसका जो हम कंपैरिजन जो हमें समझ में आ रहा है वो एनालिसिस हम लोग इसको टुवर्ड्स द कंक्लूजन कर दें.
इस तरह से, so that whenever we break a question, it appears very bold on the part of the candidate that he has the guts at least to address it. कि मैं कुछ लोग क्या करते हैं, वो beating about the bush होता है, उनको भी समझ में आ जाता है एग्जामिनर को, not getting to the point and he's just trying to bluff. तो इसीलिए when we give these headings, we showcase to the examiner that we want to address the question and this is how we have done it. So I would also like to highlight this is something coming from the other side of the table कि जब मतलब मैं भी पेपर लिखता था तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि मतलब मैं ऐसा चक्कर कटा दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा. बट होता क्या है जब आप 50 कॉपीज देख रहे हो बैक टू बैक and then you've seen some good copies and you Yes. would appreciate that since you are now in a teaching position in Ranchi. तो मतलब वो जो beating around the bush is very apparent very quickly Yes, कि sir. मतलब वो देखते ही दिख जाता है कि यार ये टाइम पास कर रहा है जो भी है. And even the reverse is true, sir. Suppose we are checking like 100 copies, और अगर हम जल्दी जल्दी भी copy check कर रहे हैं ना, तो that one copy which is outstanding, you will notice it. Even You if you will. are giving very less time to evaluating, you will notice, okay, that this is an exceptional copy. हाँ तो वो बिकॉज भी पता लग जाता है. वो पैटर्न दिख जाता है आपको सारा आपको Yes, कीवर्ड्स दिख गए हैं मतलब आपका भी ब्रेन तो मतलब इन द जोन आ चुका है कि हाँ जी ये yes, चीजें देखनी है. yes, sir. सो मतलब मेंस में अपार्ट फ्रॉम लाइक ब्रेकिंग क्वेश्चंस डाउन एंड पीवाईक्यूज आपने थोड़े कम एनालाइज किए बट यू फोकस अ लॉट मोर ऑन योर GS2 and GS3 current and these things. Did you make your notes for mains? Yes, sir, I had done that. So initially मैंने क्या किया था कि syllabus point approach था. Syllabus को लेकर के हर एक point पे कुछ static knowledge मैंने वो compile कर लिया था. और उसके बाद as जैसे मान लीजिए disaster management का topic है, तो उसमें मैंने कर लिया, और मान लीजिए कोई disaster management act में कोई amendment आया, तो बाद में उसको update कर लिया, या फिर अगर वो current में आया है तो to like connect with the static part, because we don't know कि question किससे poverty पे question आ सकता है, which is very static in nature. But then it can also be linked to some current report which has just come out. तो उस तरह से तो स्टैटिक में सर सिलेबस का हर पॉइंट पे मेरे पास था नोट्स बना हुआ अपने खुद के. ओके. तो मतलब जैसे अब मेंस में कभी कभार प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे जीएस के कुछ टॉपिक्स तो अपने हो गए जो प्रीलिम्स में भी हैं तो लॉट ऑफ दी नॉलेज इज कैरिड ओवर फ्रॉम देयर. बट जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स आ जाते हैं वहाँ पे लोगों को बहुत बार डाउट होता है कि यार इनका सोर्स क्या है इनको पढ़े कहाँ से क्या करें क्या ना करें. तो वेयर डिड यू स्टडी दोज मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक फॉर एग्जांपल GS1 में वेयर डिड यू स्टडी इंडियन सोसाइटी फ्रॉम. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जो भी टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे को नोट्स बनाना है, मैं उसको जब बस गूगल में डाल करके उसके आगे यूपीएससी लिख करके आई यूज्ड टू सर्च, दृष्टि का आ जाता था या किसी का आ जाता था, Yeah. वहीं से उसको हम नोट डाउन कर लेते थे. दृष्टि हैज मेड गुड कंटेंट अपॉन दीज टॉपिक्स, तो उसको हम यूज कर लेते थे. Okay, so you did this for GS1, 2, 3 and all. Yes sir, but I had done this a year in advance. मैंने 2022 में, जैसा मैंने बताया, स्टेट में मैं मेंस दे रही थी, तो उसी समय मैंने ये वाला काम कर लिया था, स्टैटिक क्वेश्चन पे हर पॉइंट पे नोट्स बनाने का. तो व्हाट वुड यू से मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये नोट्स बना लेना पहले से. So actually जरूरी है, because otherwise you tend to get overwhelmed. The syllabus is huge and आपका prelims निकल गया, there are 110 days to mains. अगर इस तरह का homework पहले का नहीं किया हुआ है तो थोड़ा challenging हो जाता है, because everything appears new otherwise. So one has to do this beforehand. Prelims clear आपका हो जाए, उससे पहले ये काम आपका हो जाना चाहिए. So now coming to the part where you were doing all of this with a full-time job. Yes sir. So but like how challenging was that and how did you manage your time मतलब first and foremost कि भाई मतलब वो job when did you start doing it and साथ में तैयारी का आपने कैसे rhythm how did you set your rhythm along with job. So I joined here in June 2022. और उसके बाद मैंने यहाँ, जैसे यूपीएससी प्रेप वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर आई स्टार्टेड माय ये कोचिंग वाला मॉक टेस्ट और ये सब देना. तो दिस आई स्टार्टेड इन सितंबर. तो मेरे पास जून से सितंबर तक मैं बहुत सीरियस कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रही थी. तो आई वाज जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द न्यू प्लेस, बिकॉज आई हैड जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू रांची, getting used to the place, and I was seeing मेरा work hours कितना है. The good thing with me was that it is an academic job, so basically I could study even in my office. तो उसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं थी. And I was teaching geography, so it was ऑप्शनल की actually तैयारी वहीं पे हो गई. वही मैंने रिविजन हो रहा था. पर सर ये कह नहीं सकते हैं ऑप्शनल की तैयारी, बिकॉज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको बहुत बेसिक से सब चीजें बतानी होती हैं. तो हर चीज को सिंप्लीफाई करना, दैट वाज टेकिंग अ लॉट मोर एफर्ट एज कंपेयर्ड टू इफ आई वर टीचिंग इन अ कॉलेज इन दिल्ली से, वेयर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी
लाइक दे नो अ लॉट। तो हम्म कहने का मतलब उनके ऊपर काम कम करना पड़ा है। यहाँ स्टूडेंट्स को लाइक बेसिक लिखने पढ़ने में दिक्कत आती है, हम्म सो उन लोगों का वो भी चैलेंजेस है। सो सिंप्लीफाइंग थिंग्स एंड सो ऑन। सो मेरे आवर्स जो थे वो फ्लेक्सिबल थे। हम्म जैसे जब मेरे लेक्चर्स होते थे उन आवर्स में मैं रहती थी, बाकी टाइम आई यूज्ड टू रीड इन माय ऑफिस, आई यूज्ड टू स्टडी ज्योग्राफी, उस तरह तो से। जनरली आपके पास कितना टाइम था दिन में पढ़ाई के लिए? So I used to go to office around say 10:30, and हम्म I would return about 3:30 ऐसा। तो दैट्स प्रीटी गुड। yeah, मतलब yeah. यू हैड अ गुड 8 7 8 hours every day sort of to prep. Yes, yes. So in the morning I had some time, and after that in late evening I could focus. लेकिन ये तभी जब एग्जाम पास आने लगता है तब वो हम्म टाइम थोड़ा सा उसको ज्यादा यूज करते हैं। अदरवाइज तो किसी दिन 2 घंटे हुए, किसी दिन 3 घंटे हुए, ऐसे ही पढ़ाई हो रही थी। सो लाइक हाउ डिड यू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन एंड क्योंकि देखो नौकरी तो लग गई है। यस बहुत सर। बार क्या होता है ना कि जैसे ही हमारे पास हाथ में कुछ आ जाता है वी हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी, तो एक वो ड्राइव एक वो फायर एक वो मोमेंटम जो होता है ना वो भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो यस। व्हाट enabled you to keep this fire inside you alive कि नहीं करना है? सर मेरा पूरा ये बीए एमए एमफिल पीएचडी ज्योग्राफी में करने का मोटिव ये था कि मैंने शुरू से सोचा था जब भी मैं यूपीएससी मेंस लिखूंगी ज्योग्राफी ऑप्शनल से लिखूंगी। हम्म आइडिया ये था मेरा। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ा भी रही थी, तो वो कांस्टेंट रिमाइंडर था कि ज्योग्राफी लिया क्यों है मैंने मेरे लाइफ में। आई कुड हैव डन इंजीनियरिंग, आई कुड हैव डन मेडिकल, आई कुड हैव डन या एनीथिंग। साइंस था क्लास 12 में, एंड आई हम्म हैड 12, लेकिन ये लिया है तो वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में तो था। हम्म और this was my plan B actually. This हम्म job in academics, this was my plan B, but plan B became my plan A, क्योंकि वो सारा फोकस इस पे था कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो हम्म क्या होगा। सो दिस मेरा यूपीएससी का प्लान बैक बर्नर पे चला गया। तो जब एक बार यहाँ जॉब हो गया, देन आई थॉट कि अब तो इसको फुल टाइम परस्यू करते हैं, अब और हम्म कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो दिस वाज द मोटिवेशन। So I think that's a very fairly solid thing. But coming to the other side, कि भाई now that you are through with the journey and like you've successfully exited the UPSC aspirant वाला journey, now you're a officer. Would you recommend to somebody to like do that BA, MA, MPhil वाला thing that you did? No sir, I wouldn't। Why not? बिकॉज आई मीन इट्स लाइक विनर टेक्स ऑल। अगर हो गया Hmm. तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर ह्यूमैनिटीज में बहुत कम स्कोप है एक्चुअली। Hmm. आई मीन बहुत कॉम्पिटिटिव है। कुछ लोग हैं जो टीचिंग पोजीशंस ले रहे हैं, बट इट्स वेरी लिमिटेड। सो Hmm. मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर स्ट्रगलिंग, देयर आर वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, सो इट्स बेटर टू हैव सम प्रोफेशनल डिग्री। Hmm. चाहे कोई बीएड कर ले, टीचिंग में चले जाए, या फिर इंजीनियरिंग है पहले से, कोई भी ऐसा कोर्स आप लीजिए जिसका मार्केट वैल्यू है थोड़ा सा। Hmm. So I would not recommend वो conventional। वो BAMA was good in the 1990s maybe, but not so much as of today. Right, because मतलब I asked that very pointed question very simply because there are a lot of people जो मतलब be it on YouTube comments, be it on email, they reach out to us and they say कि मतलब मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि जी हमने टीना डाबी मैम का देखा था तो वो उन्होंने बोला जी हम तो यही कर रहे हैं क्योंकि हमको यूपीएससी देना है। बट एज यू वेरी राइटली पुट इट इट्स अ विनर टेक्स ऑल। हो गया तो बहुत ही बढ़िया है मतलब यू नो ऑल योर बेट्स हैव पेड ऑफ बट लाइक फॉर द मोस्ट पीपल इट वोंट। Hmm. सो Also, sir, if someone is planning to say do this in the conventional way, take subjects like economics. Take subjects which can help you take a job tomorrow. If we take some subject जैसे कि मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी ही है, तो ज्योग्राफी में भी अगर आगे जाके आप जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इस तरह की टेक्निकल फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हैं, तब तो ठीक है, आप कल को यू कैन वर्क समवेयर। But otherwise, it becomes very difficult to find a job. So take subjects which have market value, like say economics and so on, computer science. इन सब subjects में आप कर सकते हैं। how can somebody prep for geography optional? मतलब what is the like you know basic groundwork that they need to put in? Okay, sir. So the first thing would be that look at the syllabus, Hmm. look at some basic books, and identify whether you have interest in the subject at all, Hmm. because the syllabus is vast। और कुछ लोगों को जैसे इंट्यूटिवली पसंद नहीं आता है उतना जिस तरह का है सिलेबस, तो एक बार उसको जज कर लीजिए। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पेपर 1 के लिए बात करें तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी है बाय सविंद्र सिंह फॉर पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर। Hmm. जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी है बाय माजिद हुसैन, दैट कैन बी वन बुक। उसके अलावा पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है Hmm. उसमें आप डी आर खुल्लर की किताब पढ़ सकते हैं। कौन सी? और मेरे लिए डी आर खुल्लर ज्योग्राफी Okay. ऑफ इंडिया।
मेरे लिए व्हाट वाज बेनिफिशियल वाज कि एक तो बैकग्राउंड था सब्जेक्ट में, उसके बाद ये किताबें पढ़ने के बाद मैंने हिमांशु सर के साथ गाइडेंस आईएएस से 500 प्लस का कोर्स किया था। तो ओके। बेसिकली इट एक्टेड एज अ ब्रिज, जो मेरा स्टैटिक नॉलेज है और जो एग्जाम का डिमांड है उसको कनेक्ट करने के लिए वो कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल था। ओके, सो मतलब अब जैसे ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग, मतलब अगेन आई एम वेरी 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 uneducated in terms of what goes for geography optional. So if you had to give some tips for people Yes. who have geography optional, तो what would be your top 3-4 tips कि भाई ये चीजें करनी होती हैं, सही रहेगा? पहली चीज तो ये है सर कि ज्योग्राफी का सिलेबस वास्ट है, तो कंसोलिडेट करना जरूरी है। हम्म। तो मतलब आप पढ़ते जाइएगा तो इट विल जस्ट कीप ऑन पाइलिंग अप। तो हम्म। जैसे जो भी आपने पढ़ा उसको शॉर्ट में, जैसे लोग कहते हैं कि एक पेज में उसको समराइज करके आप लिख लीजिए ताकि बाद में हम्म। रिवीजन करने के लिए आसानी हो। एक आपके पास, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर है तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे मैप्स, डायग्राम्स, ये सारी चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसके हम्म। लिए भी आप एक अलग नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप इस तरह के मैप्स बना सकते हैं जहाँ से आप रिविजन करें। वो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कुछ, तो उसके लिए अलग अलग डायग्राम्स होते हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। मैपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी हम्म। पेपर। तो उसमें इनफैक्ट ऑप्शनल पेपर 2 में 20 मार्क्स का पूरा वो मैपिंग आता है, तो वो आपको अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन हो विच इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजों में स्पेशल एंगल देना जरूरी है। और जो भी आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू Can अंडरस्टैंड इट्स you give me some example of this? So there is this demographic transition theory in geography। तो उसमें तो वो पूरा theory is there। तो जैसे क्वेश्चन अगर आता है कि demographic transition theory का limitations क्या है, तो हम्म। उसमें हम सिर्फ theory के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कैसे कैसे deviations देखने को मिला है from the model। So ओके। for that यू आर यूजिंग दी अप्लाइड नॉलेज, जो कि जो ये जिन लोगों ने ये थ्योरी प्रोपाउंड की है उन्होंने इन चीजों के बारे में बात नहीं की थी। But we as students, we have to हम्म। look at the applied aspect of all these theories। या बिकॉज इन द एंड जो एग्जाम है हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर रहा है, एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो थ्योरी आपको अप्लाई ही करनी है। Yes, yes, फॉर सम रीजन यू यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड प्रोपाउंड। yes। Outside of UPSC preparation, I don't hear this word at all. But in UPSC preparation, anytime I go, मैं sociology में भी ये सुना है, मैं geography, मैं हर जगह सुना है, and like I don't know where it is coming from. It is, it's not a usual word, is it? Propound. No, sir, it's not. It is usually used in this context only, that the theory was propounded by so and so। Hmm. Yes, तो आई yes, थिंक मे बी इट्स जस्ट कि वो थ्योरी से पहले बात बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा था। yes। तो अच्छा, हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर ज्योग्राफी ऑप्शन, बोथ पेपर्स कंबाइंड? So 283। एंड दैट्स अ प्रीटी सॉलिड स्कोर। तो एक जैसे और ज्योग्राफी ऑप्शनल का लास्ट क्वेश्चन दैट आई लाइक टू आस्क, देयर आर अ लॉट ऑफ दीज क्लेम्स दैट ज्योग्राफी में स्कोर नहीं आता आजकल। तो अगेन ऑब्वियसली योर बैकग्राउंड बीइंग सो एक्सटेंसिव इन ज्योग्राफी, यू वर नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, बट हैव यू हर्ड ऑफ दीज क्लेम्स? I have, sir, and I would also like to underline that इस बार भी ज्योग्राफी में जो हाईएस्ट मार्क्स है इट्स अराउंड 323। हम्म। एंड उसके बाद मैंने सुना है एक किसी को 312 आया है। तो और उन लोगों का बैकग्राउंड कोई नहीं है सब्जेक्ट में, दे आर पीपल हु आर इंजीनियर्स एंड उन्होंने दे पिक्ड अप द सब्जेक्ट एंड दे डन वेरी वेल। मेरे हम्म। साथ ये था सर कि ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा तो पेपर था, तो मैंने पढ़ा जरूर था लेकिन मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि मुझे वो टाइम जीएस पे लगाना चाहिए बिकॉज दैट इज माई वीक फ्रंट। तो हम्म। मैंने उस पर यूज किया। तो मुझे लगता है कि आपका बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, अगर आपने अच्छे से आंसर राइटिंग की है तो हम्म। देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट स्कोर 280 प्लस इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। चाहे कितनी भी खराब मार्किंग हो, आप 280 प्लस ही रहोगे अगर आपने अच्छे से आंसर राइटिंग की है तो। मैन आई थिंक दैट्स मतलब 280 प्लस आप ऑप्शनल में ला रहे हो तो दैट्स अ गुड स्कोर, क्योंकि मतलब 300 प्लस इज वेरी गुड, 320 प्लस इज एक्सेप्शनल क्योंकि मतलब बहुत ही रेयर होता है वो, बट 280 प्लस इफ यू स्कोरिंग इन ऑप्शनल दैट्स अ गुड स्कोर। तो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, एक तो आई थिंक यू बीन मेंशनिंग कि भाई फर्स्ट कोचिंग आपने जो ली थी वो upscprep.com से ली थी, वाई? मतलब we were not a very big name in the market, we were not very established back in 2022 when you gave us a chance. So like what made you take that bet? So my brother used to follow you online Hmm. and so on. He told me that you can take this coaching. Why? Because you can do a one-to-one session. क्योंकि Hmm. इसमें इतनी भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि आपको मेंटरशिप नहीं मिल पाती है। Hmm.
और इसमें आपके कोर्स में वो चीज थी दैट वीकली या मंथली आप एक मेंटरशिप सेशन ले सकते थे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि यू ज्वाइन दिस कोर्स एंड बिकॉज यू वर अ न्यू थिंग कमिंग अप, सो यू हैड दैट ये कि 1-to-1 करेंगे, तो दैट वाज समथिंग यूनिक अबाउट योर कोचिंग. तो दैट इज Yes. समथिंग दैट वी आई थिंक सॉर्ट ऑफ स्टिल डू. एंड वो 1-to-1 वाली चीज़ हम चाह रहे हैं कि भाई मतलब वी मेंटेन दैट, बिकॉज इन दी एंड कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम सबकी सेम है. Yes. प्रॉब्लम सबकी ही सेम है, क्योंकि जो सारी बातचीत हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन. बट फॉर सम रीजन if you say it to the person, that has a like much bigger impact, much how would you say, deeper impact, क्योंकि आप उनसे बात कर रहे हो और सिर्फ उनसे बात कर रहे हो. बिल्कुल सर. क्योंकि अदरवाइज मतलब मैं ऐसा कोई नया ज्ञान थोड़ी दिया है जो कि मतलब मेरे से पहले किसी मतलब 50 लोग मेरे से पहले दे रहे थे. दैट इज हाउ आई लर्नड इट एंड दैट इज हाउ आई हैव बीन एबल टू ट्रांसमिट इट. So somewhere or the other, I think that personalized attention to aspirants is something that we focus a lot on. But anyhow, so coming to the next stage of the exam. So this is the first time that you've cleared prelims, first time that you've cleared mains, you've made it to the interview. Yes. तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में चल के आ रहा था कि भाई what is happening? Are you excited? Are you nervous? Or what's happening? What is going on in your head? सो सर इंटरव्यू का जो मेंस का रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को आया, और फर्स्ट लिस्ट ऑफ इंटरव्यू जो डेट्स थी वो 19 दिसंबर को आई, एंड ऑन 19 दिसंबर आई रियलाइज्ड कि मेरा इंटरव्यू 3 जनवरी को शेड्यूल कर दिया गया है, व्हिच वाज लाइक एकदम पास में 2 सप्ताह का टाइम था. फर्स्ट थिंग वाज कि व्हाट विल आई रीड, हाउ मच विल आई रीड, और मेंस के बाद पेपर पढ़ना तो बंद कर ही दिया था, लगा कि अब तो लिखना है नहीं, तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे थे, आई वाज आउट ऑफ टच. तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन मॉक्स देना शुरू किया. आई वाज इन रांची, सो आई वाज डूइंग ऑनलाइन मॉक्स. आपके साथ भी मैंने एक सेशन किया था, और बट उन मॉक एग्जाम्स में मुझे ये समझ में आया कि मेरा तो करंट का नॉलेज वीक है, बहुत सारे गैप्स हैं, कैसे ब्रिज होगा. तो वो 2 सप्ताह में जो जो भी कुछ हुआ, मतलब जो भी करंट चीजें हैं वो सारा पढ़ना, और सब पे अपना वो एक टेक बनाना कि अच्छा ये ओपिनियन रहेगा, वो ओपिनियन रहेगा. I knew this, that I articulate well, so I'll be able to do that in the interview. Problem बस थोड़ा content का हो रहा था. But anyway, when I went for the interview, ऐसा लगा नहीं कि बहुत कम टाइम था, या the board was cordial. It was General Raj Shukla sir का board था. So he asked a lot of questions related to geopolitics, or how is geography related to geopolitics. He was playing in my domain. He was asking me many questions about geography, so I was able to do that. Situation based questions थे, तो वो भी मैंने confidence से address किया, and I think I got like pretty good marks. I mean 200 marks I got. You have one of the highest marks. मतलब any year में if you're touching 200, I consider that to be like an excellent candidate. And even now, like for example, when we are talking to you, are very clear and lucid about the things that you're explaining. मतलब there is मतलब at least to me, it's very clear what you're saying. Maybe if there is some confusion, people can let us know. Which is the point that I would like to raise here. How helpful do you think was that teaching experience जहाँ पे आपको geography एकदम वो break down करके लोगों को समझाना पड़ रहा था? How much of an impact did that have in your overall sort of improvements in terms of both your writing and your speaking? सर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हुआ, बिकॉज एक मुझे बहुत चैलेंजिंग यहाँ लग रहा था, बिकॉज इन रांची द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज हिंदी मोस्टली. Okay. Students are writing in Hindi, so I 70% of my time I was translating the content in Hindi और उनके लैंग्वेज में बताना समझाना, इतना कि मुझे लगा 2 साल बाद तो मैं इंग्लिश भी पता नहीं बोल पा रही हूँ कि नहीं, आई एम स्टैमरिंग, आई एम लूजिंग कमांड. दिन रात तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, तो वो था. लेकिन हाँ ये चीज है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को एकदम बच्चों की भाषा में ऐसे बताना कि वो ग्रास्प कर पाए, तो वो चीजों को सिंप्लीफाई करना, तो वो सारी चीजें इट हेल्प्स. Means maybe if it's a very like a complicated question, तो how to simplify it. जैसे इस बार जो ऐसे टॉपिक आया था, तो जो abstract topics आते हैं तो सुनने में Which तो बड़ा. one did you choose? Okay, so sir, from section A I had written on the one which was thinking is like a game, ऐसे करके था एक topic. Yeah. तो उस पे मैंने इसी तरह ब्रेक किया था कि what is thinking, why is it a game. So एक sec. I think the topic was thinking is a game and you need two sides to play. Yeah. Right. So, like, can you give us a brief outline of what was the essay that you wrote? How did you simplify this? I'm trying to recall कि उसको start कैसे किया था. अभी तो exactly
वो याद नहीं आ रहा। बट सर मैंने इस टॉपिक को चूज किया तो मैंने इसको पहले सोचा कि कैसे लिखें, तो मैं उसी तरह लिख रही थी कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल टॉपिक्स मिलता है तो उसको भी मैं उसी तरह ब्रेक करती थी कि मैं आई यूज्ड टू पोस्ट क्वेश्चंस विद इन द एसे लाइक व्हाट हम्म इज थिंकिंग, why is it a game, why is हम्म it fun only when there are two sides to play, उस तरह से। तो मैं उसमें बता रही थी कि कैसे थॉट प्रोसेस में भी आई मीन मतलब मैं बहुत फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड तो नहीं है मेरा उतना, लेकिन मैंने जितना मुझे समझ में आया कि हम्म दो काउंटर थॉट्स भी हमारे दिमाग में आते हैं, तो इट इज हम्म नॉट अबाउट कि विच साइड इज विनिंग, इट इज अबाउट रीजनिंग विद द अदर हम्म साइड, उस तरह से। एंड आई वाज यूजिंग वेरियस एग्जांपल्स, हम्म और उसमें कुछ जो फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा था उनके हम्म। उसको भी मैंने इंक्लूड किया था विद इन द एसे। अरे so somewhere or the other I think एक जैसे फाइनमैन टेक्निक बोलते हैं यस सर। कि explain it to somebody as explain it to a 5-year-old and if you can't you probably don't get it yourself. यस यस I think यस I've mixed two things, एक वो आइंस्टीन का कोट है and एक वो फाइनमैन टेक्निक है, but anyhow. यस So I think that is something that has absolutely been useful and helpful for you through and through your journey, right? And that is the sort of conversational style that you've also developed in writing, which has helped you in your essays. How much did you score in your essay paper? 129 सर। That's a pretty good score for this year because malab, 140 is the highest that I've heard, and that is for somebody who did not clear the final. But like again, most of the selected candidates 120, 125 के पास आ रहे हैं, तो that's a pretty good score also. यस So, अगर if somebody is preparing for this time prelims 2024, what would be some recommendations from you to people who are, let's say, absolutely new in this journey? ओके, सो द फर्स्ट थिंग वुड बी कि अभी तो टाइम है हमारे पास, तो आप टाइम जितना है। हो, नहीं टाइम इन द सेंस की नंबर ऑफ डेज टू टिल प्रीलिम्स, तो अभी या समय है थोड़ा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ध्यान में रखना ही है, अगर हम्म अभी तक नहीं किया है तो अभी उसको कर लीजिए। सी सैट को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इवन हम्म इफ यू हैव बैकग्राउंड लाइक मैथ्स है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, फिर भी सी सैट को करिए। तीसरी चीज ये कि एग्जाम में जब आप जाते हैं तो ये मत सोचिए हर क्वेश्चन में कि नहीं होगा तो क्या होगा। हम्म एग्जाम को एग्जाम की तरह दीजिए, मत सोचिए यूपीएससी दे रहे हैं, सोचिए कि कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, बस एक एग्जाम है वो। डोंट गो अबाउट द हाइप एग्जाम के हम्म पीछे, वो है ना पूरा 0.001% सिलेक्शन। डोंट थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स, लेट यूपीएससी थिंक अबाउट दैट। यू हम्म जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एम एस धोनी, so that is going to help you in your temperament to chase हम्म the exam. And overall yeah, so these would be my consolidate. This is also the time to revise and consolidate. Don't go for new things. If you have not read anything, leave it and consolidate what you have already done. Okay, so मतलब would you also recommend somebody to make notes for prelims? आई थिंक दे शुड हैव डन इट, मैंने क्योंकि इट बिकम्स ईजियर। जैसे आपने कोई मॉक एग्जाम दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, तो उसको आप नोट डाउन करिए, बिकॉज बाद हम्म में आप वो पूरा मॉक टेस्ट उठा के तो रिवाइज करोगे नहीं। हम्म जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए, मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हुए, तो उन 30 क्वेश्चन के आप नोट्स बना लीजिए और हम्म उसको लास्ट में एक बार रिवाइज करिए। एंड आई एम होपिंग कि पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ी है उसके नोट्स तो आपके पास होंगे ही, तो दिस शुड बी दिस शुड बी योर गो टू फॉर रिविजन। So I think you have been one of the more meticulous candidates who has cleared this exam, and that's an absolutely great way. Because I think if somebody follows what Akanksha ma'am has done over here, in that she prepped for her mains way before her prelims, and मतलब वो attempt दे रही थी, सारा साथ में चल रहा था, but like again जो सारा effort था, जो big chunk of it था, जो सारा मेहनत वाला काम था, वो पहले कर लिया था, तो एक वो थोड़ा संतुष्टि रहती है। And kahin na kahin, I think having some sort of a stability of a job also is something that was very, very useful and helpful. So, matlab, if there are working candidates, let's say, who are preparing for 2025, how what would you recommend to them? कि भाई क्या कर सकते हैं वो, किस तरीके से बढ़ सकते हैं? Yes, sir. So first of all, these people who are working, first of all, kudos to them that they have thought कि जॉब करते करते हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे। हम्म रिजाइन करने के बारे में मत सोचिएगा, मुझे हम्म लगता है कि उसके बाद स्टेक्स और बढ़ जाते हैं। बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि मैं जॉब छोड़ करके नहीं, अगर जॉब है तो जॉब में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जल्दी उठिए, 4-5 बजे उठिए, 5 बजे से पढ़िए। जब भी ऑफिस जाना है आपको, मान लीजिए 3-3 घंटे आपने सुबह अगर पढ़ लिए ना, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 6-7 घंटे जो आदमी दिन में पढ़ता है। हम्म तो वो सुबह
का टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर आपको ऑफ़िस में फ्री टाइम मिलता है कभी, तो आप उसमें बस ये प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन वो जो क्विज़ आते हैं, डेली क्विज़, वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट टू बी इन द मोड कि एग्ज़ामिनेशन के मोड में हम हैं। और उसके बाद जिस दिन आपको छुट्टी है, वीकेंड्स हैं, उसमें आप थोड़ा-सा अपना नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हैं। बट वो एक बहुत बड़ी लग्ज़री होती है जब आप जॉब में हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग है, आपका टेम्परामेंट अलग है, इट हेल्प्स अ लॉट। सो अगर आप जॉब में हैं तो क्विट करने के बारे में मत सोचिए और आप इसमें रहिए। आपके पेरेंट्स के ऊपर भी कम प्रेशर होगा, आपके ऊपर भी कम प्रेशर होगा। इट विल बी अ गुड प्लेस टू बी, आई थिंक। Right. And I think एक last part of our discussion that I would like to discuss with you is sort of कि in the entire journey for UPSC, जैसे शुरू में हमने बात करी थी, मतलब this has been sort of बीच बीच में हमारे conversation में सारे कहीं रहा है, but I wanted to discuss this in a consolidated manner also. Mental health and sort of learning to manage your emotions and learning to manage yourself is absolutely critical. At least that's what I feel. उसके बिना नहीं हो सकता है, मतलब Yes, what is your take on it? I can't agree more, sir. I mean, mental health absolutely it's very हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी mental health कितनी खराब हो रही है in the हम्म process. I mean, there are कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि रात रात भर नींद नहीं आ रही है, प्रीलिम्स आ रहा है, अंडर प्रिपेयर्ड हैं, ये सारी हम्म चीजें। तो वो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, फिजिकल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है। हम्म और उसके बाद वो सो इट्स सच अ लोनली जर्नी ना। आई मीन, जितने ज्यादा साल आपके लगते हैं उतने ज्यादा लोनली because आप हो I जाते think हैं। you were very casually saying कि मतलब ऑफिस से पहले पढ़ के जाओ, वीकेंड पे जब हो तो मतलब और पढ़ लेना। मैं कहा सोशल लाइफ तो गई बाहर। सोशल लाइफ तो गई सर, सोशल लाइफ गई। और हम्म आपके जो दोस्त है ना, वो आज आपके दोस्त, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो यू माइट बी हैविंग 10 गुड फ्रेंड्स, लेकिन जब आपका फिफ्थ अटेम्प्ट है तो शायद एक एक ही बचे आपके पास। हम्म और उसके बाद भी जब आप हर चीज को ना ना बोलते हैं कि पार्टी में है तो नहीं जाना है, घूमने है तो नहीं जाना है, हर चीज में आप ना ना बोलते हैं, देन पीपल इवन स्टॉप आस्किंग यू कि इससे yeah तो पूछना ही नहीं है, ये तो एकदम स्पॉइलर है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी, हम्म focus on meditation, do yoga, do exercise, don't ignore your physical health. हम्म I mean, that is equally important. If you're physically fit, your productivity is going to be better. Don't ये definitely नहीं सोचो कि ये गलती मैंने भी की है सर, कि जब सब सारा ठीक हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तब हेल्थ पे ध्यान देंगे। हेल्थ इज नॉट गोइंग टू वेट, इट्स गोइंग टू डिटीरियोरेट। हम्म यू कांट थिंक कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं हेल्थ पे ध्यान दूंगी, उसके बाद मैं जिम जाऊंगा। इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी। So eat well, focus on your physical health, mental health, ये हम्म सारी चीजें। एंड सॉर्ट ऑफ इसमें एक और नेचुरल सा एक्सटेंशन इसका आता है विच अ लॉट ऑफ पीपल अगेन आस्क इज मतलब हाउ कंफर्टेबल इज इट टू हैव अ रिलेशनशिप व्हाइल यू प्रिपेयरिंग, क्योंकि मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ इसके बारे में तो मतलब आई नो आई वुड हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड मैसिवली, क्योंकि मतलब वही माई पर्सनैलिटी टाइप बीइंग दैट कि भाई मतलब आई वुड गो ऑल इन एंड वो ऑल इन में फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ उधर। मतलब वो बोलने के लिए मतलब ठीक है आई एम इन्वेस्टिंग टाइम इन रिलेशनशिप, बट अगेन मतलब आई एम अनएम्प्लॉयड। तो मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन हैविंग अ रिलेशनशिप अलोंग विद प्रेपरेशन? सो आई थिंक सर इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ये ऐसा लाइफ का स्टेज है ना, सपोज वन इज प्रिपेयरिंग, वो जोन होता है 22 टू 28 29 या ईयर्स, तो उसमें एक कंपेनियनशिप भी, आई मीन सम पीपल नीड इट और समटाइम्स इट हेल्प्स आल्सो। आई मीन, इफ देयर आर टू पीपल एंड इफ इट दैट डज पर्सन। लाइक एक जैसे सिंपल एग्जांपल मैं दूं तो कनिष्क कटारिया हु क्लियर्ड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट 2019, ही मतलब ऑन द डे ऑफ हिज सिलेक्शन ही क्रेडिटेड हिज सक्सेस टू हिज गर्लफ्रेंड हु इज यस, नाउ हिज वाइफ। तो यस। मतलब इट डज हेल्प एट टाइम्स, तो मतलब वही पर्सन टू पर्सन है। प्लीज गो ऑन। Yes, sir, differ करता है, and I think if you have the right partner, he or she is, if she is motivating you और वो सारी चीजें हैं, तो आपके इतने lows आते हैं, तो हम्म you have someone to fall back on, किसी के साथ आप हर चीज share कर सकते हैं, तो to that extent relationship can be like, it can be very beautiful, but कुछ relationship toxic भी होते हैं, फिर आपका पढ़ाई भी disturb हो रहा है और relationship में भी zero है, आप या बाकी चीज नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कि आप डेट पर नहीं जा पा रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं है। हम्म वन हैज टू, और उसमें वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, हम्म बिकॉज हमें टाइम फ्रेम नहीं पता ना कि मेरा ये 1 साल ऐसा रहेगा कि 2 साल ऐसा रहेगा, ये पता नहीं होता है। And that is, I think, the one thing that takes the biggest toll on a lot of people, that lack of certainty. यस, क्योंकि मतलब मैं प्रीलिम्स में बैठा हूँ तो भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार एक क्वेश्चन ही गलत हुआ तो एक और साल,
मतलब कहीं पे भी any stage of this journey that I am at, I am always concerned about a future that is मतलब possible, but like I'm calculating the probability all the time. True, sir. True. Can't So agree more. how did you come to terms with that sort of an uncertain future? सो आई थिंक अभी तो एक सप्ताह पहले तक लग रहा था कि बस लिस्ट में कहीं नाम आ जाए, इस बार आ जाए, उस तरह का कुछ सर्टेन पता ही नहीं होता सर। हम्म वो है कि मतलब गॉड्स ग्रेस और उसके बाद सारा लक, हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आज मैं हम्म ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ मैं तो डिजर्व करती ही थी और जो लोग का नहीं हुआ वो नहीं डिजर्व करते थे। देयर इज अ वेरी हम्म नैरो मार्जिन। जिनका नहीं हुआ वो इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स आए थे देने के लिए, अब वो आई मीन आई एम टॉकिंग टू सम पीपल एंड इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट एंड फिर प्रीलिम्स के जोन में जाना एंड एवरीथिंग। बट वही है कि अपने सेल्फ वर्थ को एग्जाम से अटैच मत करिए। आप जो हैं आप हैं, यू आर गुड द वे यू आर। ठीक है, आप यूपीएससी के लिए सूटेबल हैं, यूपीएससी को आपकी हम्म जरूरत होगी वो बुलाएंगे, नहीं जरूरत होगी तो हम जहां हैं वहीं अच्छा करेंगे। इस मोड में हमें रहना है। I think that's very beautifully put क्योंकि and this is also something जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला which is you need to learn to love spending time with yourself. Yes, sir. Yes, sir. अगर वो वाली चीज एक बार हो जाती है मतलब दिस इज लाइक दैट्स अ वेरी हाउ डू यू से छोटा सा डिस्टिंक्शन है बिटवीन बीइंग अलोन Yes, एंड sir. बीइंग लोनली Yes, sir. एंड you don't have to be lonely but Yeah. you can be alone. Yes. एंड अगर ये डिस्टिंक्शन आपको समझ आ जाता है तो देन आई फील यू आर सॉर्ट ऑफ केपेबल ऑफ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कम अप विद दिस जर्नी क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मॉडरेशन सीख लिया है. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Right. So I think that's been a very, very insightful and fruitful discussion with you, Akanksha. And thank you so much for your time. थैंक यू सर। Is there anything that you would like to share with the aspirants preparing this year, next year, some in general future? So please. So I would just say, मतलब I have been a part of this. I've seen all the anxiety, the fear, and everything. मतलब हमें validation यूपीएससी से चाहिए, पर हमारा validation ना अंदर से आना चाहिए। आपने काम किया है, आप उसके लिए validation लीजिए। और मैंने बिल्कुल. हार्ड इस अटेम्प्ट में सर मेरा ये था कि आई हैव गिवन माई बेस्ट सपोजिडली। तो अगर नहीं भी होगा तो ठीक है, मतलब इसके ज्यादा मैं नहीं कर सकती थी। तो अगर यूपीएससी नहीं मुझे सेलेक्ट करता है तो भी कोई बात नहीं ना। आई कांट बी अनदर पर्सन ऑल टुगेदर, वो मेरा पोटेंशियल नहीं था। हम्म तो वो मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मुझे वैलिडेशन यूपीएससी से नहीं चाहिए। आई एम गुड। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरा पीछे का सारा जर्नी का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने जहां भी एक्सेल किया, ऐसा नहीं है कि आई एम अ फेलियर इन माय लाइफ। Yeah. ये वाला माइंडसेट थोड़ा सा हमें बदलना होगा। हम ये ना सोचें कि मेरा यूपीएससी में नहीं होगा तो मेरा मैं किसी लायक, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। सो जस्ट डोंट अटैच इट टू द रिजल्ट्स And योरसेल्फ। I think that about sums up the conversation. कि कहीं ना कहीं you have to have that belief, faith in the fact that you can enjoy your own company and along the way learn to do a number of other things. यस। So thank you all for listening and thank you Akanksha for your time. थैंक यू सर, इट वाज अ प्लेजर इंटरैक्टिंग विद यू। थैंक यू।